Okay, so in the next class, we start revising with the your management accounting from the last year, the last course. Okay, so we started with our standard costing. क्या होता है standard costing? इसके अंदर बजटिंग वगैरह कमीशन वगैरह करना है, फिर एक्चुअल बजट What is an attainable budget? Oh, sorry, attainable standard. क्यों अटेन करना करते हैं, कर सकते हैं. अटेन कर सकते हैं. Ideal. आइडियल तो बहुत करता है. So perfect. Okay. Current. करंट जो अभी बेस और basic. Basic are like What are controllable costs? One example of controllable costs. total cost, like where a manager can control the cost or reduce the cost. Example, labor. Where we can use standard costing and what type of organizations we can use standard costing. We can use standard costing in banking sectors. Where, what is the basic for it? In banking sector, why banking sector? First, Where there are, the operations are of repetitive nature or similar. Repetitive. Right? What are flexible budgets? There are two types of budgets, fixed budgets and flexible budgets. Fixed budgets क्या होते हैं? Revise. Last जाके नहीं पढ़ा ना कुछ, छोड़ दिया. No. From my class, मतलब in my class, we start the class from the previous year revision, previous class revision only. You need to just read through it once, and then okay. It's just the routine here in my class. We start the class from the previous class revision. Okay, so let's start with our today's topic, that is traditional costing methods. Traditional costing methods. We have basically two traditional costing methods. Agar aap kaho, these are your absorption costing and the other one is your marginal costing. These are your traditional costing methods. Okay, अगर हम modern की बात करें तो in modern we have activity based costing, ABC. Activity based costing. ये in detail I guess हमारा chapter है ABC का, activity based costing का. Now what are these absorption and marginal costing? Absorption costing entirely deals with your production cost and non-production cost. What are production costs? Which is, utilized in the production of certain products, and non-production costs which are fixed or which may be direct, which may not be directly related to the production of the product. So in absorption costing, we mainly talk about the total cost. In absorption costing, we mainly talk about the total cost. But in marginal costing, we talk about only the variable cost. What is variable cost? Which varies from every product, which varies. So in marginal costing, we deal only with the variable cost, and in absorption costing, we deal with the total cost, and total cost includes your production cost, and your non-production cost, and your non-production cost. Okay, so इसके अंदर क्या करते हैं हम लोग? अब absorption costing में usually क्या होता है? We take एक particular या एक कह लो constant variable, जैसे
there are two departments in an organization. For example, you are producing some product A, which takes 5 labor hours and 2 machine hours. Okay, 5 hours are taken by the labor to just prepare it, and excuse me, and 2 hours are taken by the machine to complete it. Check. Now, this product is what? A labor-intensive product or a machine-intensive product? It is your labor-intensive product. So at the end, whatever non-production cost you get, you absorb that non-production cost on the basis of labor hours. This is absorption costing. Name suggests absorption. You are absorbing any indirect cost on the basis of some particular rate, absorption rate, which can be anything. If it is a labor-intensive unit, you can absorb it on labor hour only. If it is a machine-intensive unit, you absorb it on machine hours. Just one single absorption rate in absorption costing. Okay, if you are direct, तो obviously वो direct labor उस पे ही चला जाएगा. Whatever direct expenses you are incurring, वो उसी पर ही जाएगा. ठीक है, अब मैं कह रही हूँ, we have machine cost of 1 lakh rupees. ठीक है, and we produce 2 products A and B. This इसमें लगते हैं हमारे 7 labor hours and 10 machine hours. ठीक है, it is a labor intensive unit, it is a machine intensive unit. We have one machine cost. Yeah, we have one rent. Rent है हमारा 10,000 rupees का. It is an indirect cost. ये क्या है आपकी indirect cost है. इसको हमें क्या करना है, इन दोनों products पर डालना होता है, absorb करवाना होता है. ठीक है, अब ये absorb किस rate पर होगा, तो वो हम एक पर्टिकुलर रेट ले लेते हैं. यहाँ पर हम ले लेंगे लेबर आवर्स और इस वाले पोर्शन में हम क्या ले लेंगे, मशीन आवर्स. ठीक है, उसके बेसिस पर हम इस 10,000 को एब्जॉर्ब कर देंगे ऑन ए एंड बी. इसे हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग. ठीक है, क्लियर है? क्लियर है? तो इन absorption costing जितने भी हमारे indirect costs होते हैं, they all are absorbed on any product on the basis of some particular thing, on a particular absorption rate. ठीक, let's see one illustration. It's on your screen. ठीक है, this is one illustration for absorption costing. Saturn, a chocolate manufacturer produces 3 products: Sky Bar, a bar of solid milk chocolate; Moon Egg, a fondant-filled milk chocolate egg; and a Sun Bar, which is a biscuit and a nougat-based chocolate. Information relating to each product is as follows. कि आपका this is your cost. What is your direct labor cost? इतना. What is your direct material cost? इतना. You are producing इतनी units. Direct labor hours लग रहे हैं उसमें इतने. Direct machine hours लग रहे हैं इसके अंदर इतने. और the selling price per unit is your 50 पैसा, 50 cents. और your annual production overhead is $80,000. ठीक है. These all are your direct cost. जो आपको पर प्रोडक्ट दी हुई है, ये सारी की सारी आपकी क्या है, आपकी डायरेक्ट कॉस्ट है. यू कैन इजीली कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ देयर लेबर आवर्स और मशीन आवर्स. आप उनके बेसिस पे इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते. लेकिन ये जो आपको प्रोडक्शन ओवरहेड दिया हुआ है, हाउ यू विल एब्जॉर्ब दिस, किस बेसिस पे आप इसको एब्जॉर्ब करोगे? You will calculate an overall absorption rate और उसके बेसिस पर आप इस 80,000 को एब्जॉर्ब करो.
अच्छा, ठीक है। तो अगर आप सिंपल पहले एक अगर कॉस्ट कार्ड बनाओ, तो क्या आप मुझे प्रोडक्शन कॉस्ट निकाल के बता सकते हो कितनी आ रही है, पर यूनिट कॉस्ट कितनी आ रही है, डायरेक्ट कॉस्ट? इज द क्वेश्चन क्लियरली विजिबल? I guess now it's more clear, right? I need to know the production direct cost. And you have to tell me whether it's a labor intensive products or machine intensive products. Whether these three are your labor intensive product or machine intensive product. वो कैसे पता लगेगा? machine. All three. First two. Why not this? You're not getting it. How are you getting it? You're getting it, huh? क्या कर रहे हैं हम? ठीक है, तीनों ही हमारे क्या है, मशीन इंटेंसिव। तो जो, हाँ, क्योंकि यहाँ पर हमारा टाइम कितना लग रहा है, 0.001 आवर्स, और यहाँ पर लग रहा है 0.01 आवर्स। ये 0.1, 0.4, 0.005, 0.2। तो ऑब्वियसली हमारी तीनों प्रोडक्ट्स क्या है, मशीन इंटेंसिव प्रोडक्ट्स। तो जो भी आपका OAR निकलेगा, OAR इज योर ओवरऑल एब्जॉर्प्शन रेट, वो जो निकलेगा वो किसके बेसिस पे निकलेगा, मशीन आवर्स के बेसिस पर निकलेगा। ठीक है, अब आपकी मशीन आवर्स का रेट क्या है, आपको मशीन आवर्स पर यूनिट दिया हुआ है, पर आपको मशीन आवर्स का रेट भी दिया हुआ है। आप इसमें टोटल मशीन आवर्स कैलकुलेट कर सकते हो। अगर एक यूनिट को बनाने में इतने आवर्स लग रहे हैं, तो 5 लाख यूनिट्स को बनाने में कितने आवर्स लग रहे हैं, कैलकुलेट तीनों के कितने आ रहे हैं, 5000, 5000 कैलकुलेट करो, 35, 35 हाउ, 5 lakh units multiplied by 0.01, 1,50,000 units multiplied by 0.04, 6,000 and 2,50,000, 5,000। एंड हमें किसको एब्जॉर्ब करना है, ऑब्वियसली 80,000 को। तो पर आर आपका रेट क्या आ गया, पर आर हमारा आ गया $5 पर मशीन आर, $5 पर मशीन आर। डॉलर से तो आएगा ना, 5 रुपी कह लो, पर मशीन आर। पर आर, पर आर भाई, ठीक। इसमें ऐसा कुछ नहीं है मैडम, इस वाली बुक में ऐसा कुछ नहीं है, ये वाली बुक तो नहीं है।
है पर डिफरेंट सेंस में। कॉन्सेप्ट तो है ही नहीं यार अच्छे से। You will get this from the when you register yourself or what? You buy it. Still waiting. They Why? Yes. Okay, maybe. चल ठीक है। ओके तो आपका निकालना क्या है? अभी देखते हैं, मैं बात करती हूँ। तो मेरे पास सॉफ्टवेयर दूसरे, आपके पास हार्डवेयर दूसरे और विल डिस्कस इट मैनेजमेंट एक बार ठीक है। टिल देन जब तक ये क्लियर आउट नहीं होता वी हैव द क्वेश्चंस। ओके चल अब व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट द प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट। ठीक, my direct labor cost how much? 0.07. my direct material cost 0.17 and my other production cost कितना होगा? 5 रुपये पर आवर। और मेरे को यहाँ पे कितने यूनिट्स लग रहे हैं? 0.05 0.01। आपने उसे absorb करा। हाँ जी wait, you have this, इसका ले लिया आपने फोटो? You have the question with you? मैंने अभी क्या करा, I have this consolidated cost, production cost of, I have this consolidated production cost of 80,000 और I need to, मुझे इसको तीनों में डिवाइड करना है। तीनों में डिवाइड करने के लिए मुझे एक रेट चाहिए, किस रेट में मैं इन तीनों में डिवाइड कर दूं। उस रेट को जानने के लिए आई नो कि मेरा ये क्या है, एक मशीन इंटेंसिव प्रोडक्ट है, तो ये किस में जाएगा? मशीन आवर्स में जाएगा। ठीक है, उससे मैंने क्या कैलकुलेट किया? ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। और वो कैसे कैलकुलेट किया मैंने? 80,000 को मैंने डिवाइड कर दिया जितने मेरे आवर्स से मल्टीप्लाइड बाय जितनी मेरी यूनिट्स थी। 0.04 multiplied by 1,50,000 plus 0.02 multiplied by 2,50,000 which came to 16,000, right? यही आ रहा था और मेरा एब्जॉर्प्शन रेट आ गया $5 पर आर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ठीक, now I have the sky, moon and sun. I need to calculate the cost. मेरी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कितनी है? 0.07. How much is my direct material cost? It's 0.17. अब मुझे निकालना है प्रोडक्शन कॉस्ट। प्रोडक्शन कॉस्ट क्या है मेरी? $5 पर आवर। पर आवर ऑफ व्हाट? पर मशीन आवर, राइट? और एक यूनिट को बनाने में मेरे को मशीन आवर कितना लग रहा है? 0.01। तो मेरी कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 0.01 मल्टीप्लाइड बाय 5 फॉर स्काई, 0.04 multiplied by 5 for moon and 0.02 multiplied by 5 for sun, right? कितना हो गया ये? Just tell me for sky only, moon and 0.05. What is your total cost? Point 0.1. 0.2. sorry 0.2. 0. Okay, abhi I'm not calculating, just tell me the total cost. How much is my total cost? 0.29 I guess. 29 0.35. 35 or 29? 0.31.
How 3.5? 3.5 पहले का 5 0.05. I need the total cost, bacha. 0.07. I want the total cost. It will be 2.9 only, no? No, total cost. Per product. 2.9. 0.07 plus 0.17 plus 0.05. जो हमारा ये आ रहा है वार्षिक कॉस्ट होगी 0.29. किसको ऐड कर रहे हो? क्यों? प्रोडक्शन किसी की निकाल कर दी है एक प्रोडक्ट का कॉस्ट कितना आ गया आपका 0.29 and its selling price is 0.5. They are given the selling price is 0.5. So how much is the profit? Sir, 19 11 21. This is my profit for Sky product. Now you have to calculate for Moon or Sun on your own. I am giving you 5 minutes. इसको मैं बड़ा कर दूं ये दिख रहा है ये 0.5. 0.53. Okay, the total cost, right? Selling price is 0.45. Is it profit or loss? It's a loss How much, please? of 7. 0.0. 7 or 8? 8, bacha. 8. 2.8. Sun. Zero point 48. 0.38. 1, 2, 1, 6. 0.1. 0.38. The selling price is 0.43. Which profit? Yeah, I guess. Let's say 0.05. 0.05 profit. Done there. So according to absorption costing, your 2 products are profitable and 1 is a loss-making product. But it is a traditional costing method. Why traditional है? Obviously इसका कोई up-to-date costing method आ गया होगा. So that up-to-date costing method is your activity-based costing. तो इसको हम properly divide करते हैं. वो अब आगे देखोगे क्या activity-based costing is more appropriate rather than absorption. यहाँ पर आप एक ही रेट पर सब कुछ डिवाइड कर रहे हो. You are dividing the complete 80,000 on one rate only. ठीक है, which is not appropriate, which may not be appropriate. So that's why it's a traditional costing method. और इस अभी just we are reading, मतलब अभी हम just revise कर रहे हैं. तो आगे आप देखोगे इसको कैसे overcome करता है absorption costing. ठीक है, अब इस costing that जो भी आपने ऊपर rate निकाला था, overall absorption rate, sometimes that rate is an over absorbed, कभी कभार वो over absorbed हो जाता है, over absorption हो जाता है,
समटाइम्स इट्स अंडर एब्जॉर्प्शन, और ये हम किससे देखते हैं? अपने एक्चुअल से. You have calculated $5 per unit as an absorption rate. Maybe actual में वो 10 rupees हो, so that is your under absorption. और हो सकता है आपका actual absorption is 8, is 4. per unit. आपका actual rate, ये हम क्या निकाल रहे हैं? बजट, राइट. एक्चुअल में हो सकता है कि आपका एक्चुअल जो अब्सॉर्ब हुआ वो 10 पर यूनिट हुआ, तो इज इट अंडर अब्सॉर्प्शन और ओवर अब्सॉर्प्शन? अंडर अब्सॉर्प्शन, क्योंकि हमने कम पे किया, राइट, तो विल ऐड इट टू इट. और इफ इट इज 4 पर यूनिट, तो ये क्या हुआ आपका? ओवर एब्सॉर्प्शन. हमें इसे क्या करना पड़ेगा? डिडक्ट करना पड़ेगा, है ना. हमें अपने एक्चुअल्स में से क्या करना पड़ेगा? डिडक्ट करना पड़ेगा. ठीक. So this is the concept of your over absorption and under absorption. और इसको कैलकुलेट करने के 3 स्टेप्स होते हैं. पहले हम क्या करते हैं? फर्स्ट वी कैलकुलेट आवर बजटेड एब्जॉर्प्शन रेट. पहले हम क्या करते हैं? वी कैलकुलेट दी बजटेड एब्जॉर्प्शन रेट. वो कैसे निकलेगा? बजटेड कॉस्ट डिवाइडेड बाय बजटेड लेवल ऑफ एक्टिविटी, जो भी हमने ऊपर निकाला. Then we multiply it with step 2. Then we multiplied our OAR with our actual activity. With our actual activity. And step 3. Your actual overhead minus step 2, that is absorbed overhead is equals to under or over absorption. Let's do it an example. ये सब न्यू है आपके लिए, या कहीं पढ़ा है? एकदम न्यू है. ठीक है, कोई बात नहीं. तो दिस इज अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन. मैंने एक एग्जांपल से बता दिया कि पहले यू विल कैलकुलेट द ओवरऑल एब्जॉर्प्शन रेट. ठीक है. यू विल मल्टीप्लाई दैट ओवरऑल एब्जॉर्प्शन रेट विद द एक्चुअल एक्टिविटी. क्योंकि आप देख लो, देयर इज वन बजटेड एक्टिविटी, देयर इज वन एक्चुअल एक्टिविटी. बजटेड जो हमने डिसाइड किया था, एक्चुअल जो एक्चुअल में हुआ, तो आप उससे क्या निकाल लोगे? एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड निकालोगे. उसको आप माइनस करोगे एक्चुअल ओवरहेड से, तो यू गेट टू नो कि वो ओवर एब्जॉर्ब था या अंडर एब्जॉर्ब था. ठीक है. हाँ, लेट्स डू एन एग्जांपल. Visible? A company budgeted to produce 3,000 units of a single product in a period at a budgeted cost of 26 per unit. Okay, 17 is your direct cost, 9 is your fixed overhead. Per unit cost आपको दिया होगा. You are budgeting to produce 3,000 units. In the period covered by the budget, the actual production was 3,200 units, and your actual fixed overhead expenditure was 5% above that budgeted. See, all other costs were as budgeted. What was the amount, if any, of over or under absorption of fixed overhead? See, let's calculate first our overhead absorption rate.
हमारा ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट हमें दिया हुआ है 9 रुपी, वी आर गिवन 9 रुपीज। तो हमारा फिक्स्ड ओवरहेड आपका बजटेड कितना था जो हमने स्टेप 2 में निकाला था, हमें स्टेप 1 दिया हुआ है ऑलरेडी 9 रुपीज। ठीक, स्टेप 2 हमारा क्या होगा, बजटेड एब्जॉर्ब्ड कितना हुआ, तो हम क्या करते हैं OAR रेट मल्टीप्लाइड विद आवर एक्चुअल क्वांटिटी, यही था फॉर्मूला। हाँ, आपको पर यूनिट ही दिया हुआ है तो आपको OAR पर यूनिट ही निकालना होता है ना, आपको टोटल कॉस्ट नहीं दी गई। और हमेशा OAR आपका फिक्स्ड का ही निकलता है या नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट का निकलता है, नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट का मोस्टली फिक्स्ड कॉस्ट होती है। ठीक, फर्स्ट स्टेप दिया हुआ है, अब हम आते हैं सेकेंड स्टेप पर। सेकेंड स्टेप इज बजट एब्जॉर्ब, क्या था वो, ओवरहेड एब्जॉर्ब। ओवरहेड एब्जॉर्ब कितना हुआ, ना नॉट एक्चुअल, अभी हम बजट में ही घूम रहे हैं। ओवरहेड एब्जॉर्ब क्या होता है, OAR मल्टीप्लाई बाय द एक्चुअल लेवल ऑफ आउटपुट। आपका OAR 28,800। अब आप निकालोगे एक्चुअल, एक्चुअल क्या आया है आपका, हम्म 3200 इंटू 30,200। ये पहले रेट कितना आ रहा है 9.45। और मैं कहूँ ये नहीं आ रहा तो लाइन दोबारा से पढ़ो, आफ्टर 3200 एक बार दोबारा से पढ़ो क्या लिखा हुआ है, the actual fixed overhead expenditure was 5% above what is budgeted, 5% of the budget। okay, budget था कितना, budget was 27,000 rupees, 3,000 multiplied by 9, budget was 27,000, उसका 105%, ये हुआ आपका एक्चुअल। बजटेड का 105%, एक्चुअल कितना हुआ 28,350। Now tell me, this is your budgeted, this is my actual. Is it over absorbed or under absorbed? ओवर एंड अंडर का क्लियर हुआ नहीं, अब ठीक है ना। आपने बजट किया था 28,800, राइट, आपका एक्चुअल हुआ 28,350, तो यू हैव ऑलरेडी ओवर एब्सॉर्ब दैट टिकट ना, है ना। आपको ओवर एब्सॉर्ब को हमेशा लेस करना होता है, यू हैव द क्रेडिट ऑफ इट, यू विल डिडक्ट इट लेटर स्टेज। द कांसेप्ट ऑफ ओवर एब्सॉर्प्शन एंड अंडर एब्सॉर्प्शन क्लियर, ऑल एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग क्या कर रहे हैं हम, क्यों कर रहे हैं, क्लियर है दादू। आपने जो टॉपिक कराया मतलब पहले रिवीजन वाली तो उनकी प्रैक्टिस करें। ये वाले जो क्वेश्चन आपके इसमें है ना, इस बुक में है, देखो अंडर एब्जॉर्प्शन और ओवर एब्जॉर्प्शन के क्वेश्चंस हैं, अभी मैंने देखो। दिखाओ मैं बताऊँ, नहीं अच्छा, अब अपस्टेयर्स यू नो ना, वॉशरूम इज अपस्टेयर्स ओनली।
You have the question for absorption costing. You have the question for your over absorption and under absorption. You have the questions, right? Okay. This is for your absorption costing question and the answer. This is over and under absorption. This is the question. The reasons we'll get to know. फिर आ गया marginal cost. So we are करेंगे. You have some questions, and then that reconciliation of it वो भी मैं करवा दूँगी तो chapter खत्म हो जाएगा. You have certain questions. बाकी में इसकी बैक पे भी होते हैं. Let him come or not? Let's wait for him. Next traditional costing method is your marginal costing. Next traditional costing method is marginal costing. Marginal costing basically deals only with your variable cost. According to marginal costing, आप सिर्फ variable cost को consider करो, fixed will remain fixed, right? So according to marginal costing, हम क्या लेते हैं कि sales, when we deduct the variable cost from sales, what we get contribution. This is important. इससे आपको पता लग जाएगा कि how much you are earning or not. इसमें से जब हम लोग fixed cost को less करते हैं, we get to know the profit or loss. लेकिन this fixed cost will remain fixed in any level of production. तो main change किसमें आएगा आपके contribution में, because sales is entire your variable cost is entirely related to your sales. अगर आप 1 lakh sales कर रहे हो तो obviously variable cost 1 lakh का आएगा. If you are selling 2 lakh units, variable cost भी आपकी 2 lakhs की आएगी. The contribution will change, but your fixed cost will remain constant. यहाँ पे अगर 10,000 है तो यहाँ पर भी आपका fixed cost 10,000 ही होगा. So according to the traditional costing method, they thought कि भैया contribution निकाल लो, इससे आपको पता लग जाएगा कि आपका profit है कितना. So they mainly focus, your marginal costing mainly focus on contribution. ठीक, और नाम में ही है marginal, incremental, जो सिर्फ change हो रहा है consider that only. Marginal क्या कहता है, जो change हो रहा है उसको देख लो, है ना, fixed तो constant है, तो it mainly focus on your contribution. Mainly focus on your contribution. Contribution is the difference between your sales value and the variable cost. ठीक है, और the difference between contribution and fixed cost is your profit or loss. ठीक है, let's do illustration number 3. For this, you need to bifurcate all your cost into variable and fixed. All your cost, whatever cost you are incurring, you need to bifurcate them into variable and fixed cost. See, let's do next illustration. That is illustration number 3. A company manufactures only one product called XY. The following information relates to the product. 20 is your selling price. Direct material cost is 6. Direct labor cost is 2. Variable overhead is 4. So contribution per unit you are arriving at 8. Fixed cost for the period is 25,000 units or 25,000 rupees. You have to complete the following table. You have to calculate the revenue, then you have to calculate the variable cost. You will reach to contribution, then you will put fixed cost, you will get to know the total profit or loss.
Okay. I know the fixed cost is 25,000 at every level. Can you tell me the profit, the revenue? In first case, let's complete the first column. Variable cost will be 12 rupees. In short, 12 into 2500. 2500, no? 25 into 2 by 2, 12. Total variable cost 6 plus 2 plus 4. These are all your variable costs only, na? 30,000. Total contribution 20,000. How much is the profit or loss? 5,000 loss, dear. Can you calculate for the rest of the columns? next one. I just want to know the profit. Do all the calculations and tell me profit or loss. For the second one? Third? Done. Next. $50. Then contribution for 5,000 units. How much is the contribution, Richard? In this, tell me the contribution. I need to know the contribution per unit. Okay. And profit and loss per unit. For unit is 0.01. How? 20,000 per unit. Na? So 20,000 is your contribution. Number of units are 2,500 units. eight. In the second case, 8. It means your contribution remains constant. What will be the profit per unit?
लॉस 4.6 and 5.50. Your profit per unit is increasing, but your contribution remains constant. Okay, your contribution remains constant. This is it for this chapter. हम इसी से ही रिलेटेड आगे करेंगे ABC मॉडल, बिकॉज अभी मैं थ्योरेटिकल में नहीं जाना चाह रही. वी आर इन अ लूप. अभी हमने ट्रेडिशनल कर लिया, विल डू मॉडल ABC, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग. तो अभी आपने क्या देखा? अब हमने क्या ट्रेडिशनल कॉस्टिंग, व्हिच वाज इंटायरली अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट, कि भाई आप एब्जॉर्प्शन कर रहे हो ऑन अ सिंगल एब्जॉर्प्शन रेट, एंड मार्जिनल में यू आर ओनली टेकिंग द कंट्रीब्यूशन वाला पोर्शन, बाकी यू आर लिविंग एवरीथिंग. दैट्स अ ट्रेडिशनल कॉस्टिंग. इसके कुछ बेनिफिट्स हैं तो कुछ प्रोज हैं तो कुछ कॉन्स भी हैं. प्रोज ये हैं कि भाई आप लोग ओवर एंड अंडर एब्जॉर्प्शन निकाल रहे हो, यू आर गेटिंग वेयर यू आर लैकिंग, एंड इट्स इजी टू इम्प्लीमेंट, ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी. लेकिन इसके कॉन्स हैं, इसकी डिसएडवांटेजेस हैं कि आप पूरा कॉस्ट को सिर्फ एक रेट पर ही एलोकेट कर, है ना. हो सकता है द परसेंटेजेस आर डिफरेंट, हो सकता है जो आवर्स लग रहे हैं वो डिफरेंट लग रहे हैं, किसी में ज्यादा लग रहे हैं किसी में कम लग रहे हैं, बट यू आर जस्ट पोर्शनिंग होल कॉस्ट इन अ सिंगल रेट एट अ सिंगल रेट. तो उस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए जो हम कहते हैं मॉडर्न कॉस्टिंग टेक्निक, it is activity based costing. It is your activity based costing. I guess 4th chapter in your book. Second year? Second year. मैं यही पूछना चाह रही हूँ कि ये बुक कहाँ से आपने ली है? करेक्ट. अब क्यों डेवलप हुआ मैंने आपको बता दिया कि उसमें प्रॉब्लम था, उसके कुछ कॉन्स थे. उन कॉन्स को ओवरकम करने के लिए हम किस पे आए, हम आए एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग. ठीक है. अभी तक हम क्या कर रहे थे, हम सारी नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट या फिक्स्ड कॉस्ट को एक जगह इकट्ठा कर रहे थे, उसका एक ही OAR रेट निकाल रहे थे और उनको डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स पे डाल. दैट व्हाट वी आर डूइंग, ये हम ऑलरेडी कर रहे थे. लेकिन इसमें प्रॉब्लम था प्रॉब्लम हमें लग रहा था कि भाई तुम एक जगह पुल मत करो, डिफरेंट चीजें डिफरेंट डिफरेंट चीजों में डालो. इसी को ही ओवरकम करने के लिए व्हाट दे डिड इज, उन्होंने कहा जो कॉस्ट है कीप इट सेपरेट.
कॉस्ट को अलग अलग रखो, ठीक है। इस कॉस्ट को अलग अलग रेट्स में एलोकेट करो, अलग अलग रेट्स निकालो सबके, ठीक है। उन अलग अलग रेट्स को फिर आप क्या करो, डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स में डालो, सबको डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स में इकट्ठा करके डाल। दीज आर योर प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो जो ये चीज थी इसे हम क्या कहते हैं, कॉस्ट पूल्स, जहां पे हमारी कॉस्ट इकट्ठी होती है, ठीक है। जो उसको ड्राइव करते हैं, ड्राइव मतलब जिनके बेसिस पर हम उन्हें एलोकेट करते हैं, उन्हें हम कहते हैं कॉस्ट ड्राइवर्स, ठीक है। और जिन पर हम डाल रहे हैं प्रोडक्ट्स, दे आर कॉस्ट ऑब्जेक्ट्स। तीन टर्म्स बहुत क्लियर होनी चाहिए। कॉस्ट पूल, जहां पे कॉस्ट इकट्ठी हो रही है, पूल हो रही है। कॉस्ट ड्राइवर, जो उनको क्या कर रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं इन द सेंस, कॉस्ट ड्राइवर बेसिकली जैसे आपका है, अगर सेटअप कॉस्ट है, फॉर एग्जांपल सेटअप कॉस्ट होती है मशीन को सेटअप करने की कॉस्ट, ठीक है। ये है आपका कॉस्ट पूल, बिकॉज यहाँ पे कॉस्ट इकट्ठी हो रही है। इसको ड्राइव क्या करेगा, नंबर ऑफ सेटअप्स, कितने सेटअप्स हर प्रोडक्ट ने करे, दिस इज व्हाट, दिस इज योर कॉस्ट ड्राइवर। इसके बेसिस पे हम डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स पे इस कॉस्ट को एलोकेट करेंगे। जिसके ऊपर कर रहे हैं वो क्या है, हमारा कॉस्ट ऑब्जेक्ट। जैसे रेंट है और देयर आर 4 डिपार्टमेंट्स, तो रेंट को आप किसके बेसिस पे करोगे, जितना एरिया हर डिपार्टमेंट यूज कर रहा है ना। अगर कोई मशीन है तो उसको आप किस पे करोगे, जितना आपका हर प्रोडक्ट उस पे आवर्स यूज कर रहा है उस मशीन को, है ना। अब एक प्रिंटर है, ठीक है, आपके ऑर्गेनाइजेशन में एक प्रिंटर है। अभी तक आप क्या कर रहे थे, पूरे प्रिंटर की कॉस्ट को सारे डिपार्टमेंट्स में किसी एक सिंगल रेट पे एलोकेट कर, कोई फर्क नहीं पड़ता क्या कौन क्या कर। ये बेटर है या ये कहूं कि जो डिपार्टमेंट ए है वो 4 आवर्स यूज कर रहा है, डिपार्टमेंट बी 9 आवर्स यूज करता है, डिपार्टमेंट सी उसको सिर्फ 2 आवर्स यूज करता है और डिपार्टमेंट डी उसको 1 आवर यूज करता है। ये बेटर मेथड रहेगा टू अपोर्शन योर प्रिंटर कॉस्ट, या किसी भी नॉर्मल मशीन आर पे आप उसको कर दोगे। Obviously this is best, this is the way to allocate your cost ना। This is your activity based costing। आप कॉस्टिंग कर रहे हो किसके बेसिस पर, एक्टिविटी के बेसिस पे जो काम चल रहा है। दिस इज द मॉडर्न टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग एंड मोर एप्लीकेबल नाउअडेज। पिछले वाला हमने सब छोड़ दिया, बिकॉज अगर कोई कॉस्ट आपको कॉस्ट ड्राइवर नहीं मिल रहा, उसके लिए एक कॉमन कॉस्ट ले लो, बट जिसके कॉस्ट ड्राइवर्स हैं उन कॉस्ट को आप कॉस्ट ड्राइवर के बेसिस पर ही करो। अब जैसे मेरी कॉस्ट है ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट है कि आप रॉ मटेरियल प्रोक्योर कर रहे हो, ऑर्डरिंग कॉस्ट है, ये किस पे जानी चाहिए, नंबर ऑफ ऑर्डर्स प्लेस्ड पर। अगर मैं इसे लेबर आवर्स पे करूंगी तो वो एप्रोप्रिएट नहीं है, राइट, इट्स नॉट एप्रोप्रिएट एट ऑल। और अभी तक हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में क्या कर रहे थे, वी आर एडिंग दीज टू कॉस्ट and allocating on the basis of any machine hour or labor hour, whatever। उसमें सिर्फ 2 ही concepts थे। If your product is a machine intensive product, allocate on machine hours। If it is a labor intensive product, allocate on labor hours। सोचो ही मत, कहीं जाओ ही मत। But that was not correct, that was not appropriate। That's why we came to the modern technique of it and we said no, if there is a cost pool, then there must be a cost driver। उसको ड्राइव करने के लिए कोई ना कोई कॉस्ट ड्राइवर होगा। सर्च दैट कॉस्ट ड्राइवर एंड देन एलोकेट दैट कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ दैट कॉस्ट ड्राइवर। ओके, इसके बारे में थोड़ा सा लिख लो, क्या होते हैं ये सारी चीजें। कॉस्ट पूल, cost driver and cost object।
सबसे पहले कॉस्ट ऑब्जेक्ट, a cost object is a term which describes an object to which the cost can be assigned. Cost pool. It is an aggregate of cost associated with performing a particular business task. And cost driver it affects the cost of specific business activity. It affects the cost of specific business activity. And they are the main idea behind ABC costing. अगर आपके पास कॉस्ट ड्राइवर नहीं है तो ऑब्वियसली कोई फायदा नहीं है ना। फिर बिना कॉस्ट ड्राइवर्स के यू कैन नॉट डू एक्टिविटी कॉस्टिंग, है ना। अगर मैं इससे यही हटा दूं कि किसके बेसिस पे आप एलोकेट कर रहे हो यही नहीं है, तो फिर क्या डिफरेंस रह जाएगा आपके एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में और एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग इन इटसेल्फ इज बेस्ड ऑन एक्टिविटीज and those activities are your cost drivers only. आप कौन सी एक्टिविटी कर रहे हो वो किसके बेसिस पे डिटरमाइन होगा, उस कॉस्ट ड्राइवर के बेसिस पर ही डिटरमाइन। ठीक है, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। पेज नंबर 7 there are two plants making a simple product, that is ballpoint pens. ठीक है, the factories are of same size and the same capital equipment. ठीक, दो फैक्ट्रीज हैं, दोनों बॉल पॉइंट पेन्स बनाती हैं, दोनों का सेम साइज है, दोनों के सेम कैपिटल इक्विपमेंट्स है। Every year plant 1 makes 1 million units of only one product, that is blue pens. Plant 1 is making one product only, that is blue pens, and they are making 1 million units. Plant 2, a full line producer, also produces blue pens, but only 1 lakh a year. They also produces other pens, वो black pens भी बना रहे हैं, वो red pens भी बना रहे हैं, वो green भी बना रहे हैं, वो lavender भी बना रहे हैं, बहुत सारे बना रहे हैं। ठीक है, in a typical year, plant 2 produces up to 1000 product variations. They have 1000 product variations और उनका aggregate भी 1 million pens होता है। Their aggregate equals to 1 million pens, but they are in different fields और plant 1 is making only one, that is blue pen. ठीक है,
अब मुझे बताओ कहाँ पर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का पहले तो मुझे लगाना चाहिए, वेयर आई कैन यूज एबीसी कॉस्टिंग। प्लान सेकंड ऑब्वियसली वेयर देयर आर डिफरेंट प्रोडक्ट्स, एक ही प्रोडक्ट है, व्हाट इज द कांसेप्ट, जो भी है सब उसी में डाल दो ना, व्हाई टू एलोकेट, व्हाई टू एब्जॉर्ब। नाउ द फर्स्ट प्लांट हैज अ सिंपल प्रोडक्ट्स, कोई डाइवर्सिटी नहीं है, कुछ नहीं है, आप इसमें नहीं कर सकते हो कुछ भी। जहां पर आपका डाइवर्सिटी ज्यादा है वहां पर आप किन के बेसिस पे कर सकते हो, ब्लू पेन का मशीन का शेड्यूलिंग अलग होगा, हर टाइम आपको सेटअप्स अलग करने पड़ते होंगे, देयर मस्ट बी मोर इंस्पेक्टिंग द आइटम्स कि ब्लू पेन कौन से चल रहे हैं, रेड पेन नहीं चल रहे हैं, व्हाटएवर। हर चीज का परचेजिंग, रिसीविंग और हैंडलिंग अलग होगा, है ना। और ऑब्वियसली आपका जो सेल्स होगा वो भी अलग होगा। तो इन सब में जो आपका फिक्स्ड ओवरहेड है या कह लो जो नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड है वो ज्यादा है, विच इज नॉट रिलेटेड टू अ सिंगल प्रोडक्ट, है ना। अगर आप प्रोडक्ट प्रोक्योर कर रहे हो तो वो प्रोडक्ट आप तीनों का एक साथ प्रोक्योर कर रहे हो सकता है कुछ आपके पास ऐसा फॉर्मूला हो कि आप एक ही चीज से तीनों सारे कलर्स अलग अलग बना सकते हो बाय एडिंग समथिंग, यू आर मेकिंग द बेसिक इंग्रेडिएंट इनटू डिफरेंट थिंग्स, हो सकता है। तो इस सिनेरियो में योर एक्सपेंडिचर ऑन सपोर्ट ओवरहेड इज हायर, सपोर्ट ओवरहेड मतलब फिक्स्ड ओवरहेड और नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड, ठीक है। इसी की वजह से यहाँ पे ट्रेडिशनल कॉस्टिंग नहीं यूज होगा, ट्रेडिशनल कॉस्टिंग विल नॉट बी मोर एप्रोप्रिएट हियर इन द सेकंड प्लान, ट्रेडिशनल नहीं होगा, ये ट्रेडिशनल कॉस्टिंग विल नॉट बी मोर एप्रोप्रिएट बिकॉज हम उसमें एलोकेट नहीं कर पाएंगे। अगर आप कह लो कि सारे उसमें सेम नंबर ऑफ मशीन आ जाए या सेम नंबर ऑफ डायरेक्ट लेबर्स है तो फिर सबका पेन का कॉस्ट सेम होना चाहिए ना, व्हाई आर यू चार्जिंग मोर फॉर द लेवेंडर और डिफरेंट कलर्स ऑफ पेन। आपको पता है दैट कॉमन ब्लू पेन विल कॉस्ट यू 5 रुपीज, मोस्ट प्रोबेबली 10 हो गया होगा, बट दोस more colorful pens are of larger amount, 15 रुपी और 20 रुपी, अगर जितना आप कलरफुल चाहोगे तो ज्यादा कॉस्टली होता है। लेकिन अगर हम ट्रेडिशनल यूज करेंगे तो सब में हम सेम डाल देंगे यार, फिर क्या फायदा सबको अलग अलग करने का। मे बी दैट लेवेंडर वन वांट्स मोर लेबर आवर्स, तो ज्यादा टाइम लग रहा हो, मोर मशीन आवर्स, अगर आप उस मोर सेटअप्स कि लेवेंडर वाले में आप जल्दी जल्दी डाल रहे हो तो दे नीड मोर सेटअप्स, दे नीड मोर मटेरियल, तो उस हिसाब से यू नीड टू डू व्हाट, यू नीड टू हैव activity based costing. It is more towards going towards ABC rather than doing only the traditional one. ठीक है, तो ये एग्जाम्पल का सिर्फ रीजन मेरा यही था कि जो हम अभी तक करते आ रहे थे ट्रेडिशनल कॉस्टिंग वो बहुत सारे एरियाज में एप्रोप्रिएट नहीं है, where you have a larger number of product lines, where you have a larger number of activities you are doing, so obviously you need different cost drivers to allocate your cost. In that scenario, you need to adopt ABC costing rather than going just for the traditional one. Okay, so the difference between traditional and the modern technique of it is clear. Traditional mein we are doing absorption costing and your marginal costing, but in modern technique you are doing activity based costing. Why I'm focusing more on the words because उसी में ही उसका crux है ना। आप costing कर रहे हो किसके basis पर, activity के basis, ठीक। Let's move forward. इसमें हम इसके steps determine करते हैं। Calculate how to calculate the production cost using ABC costing. क्या स्टेप्स हैं, सबसे पहले स्टेप 1 ग्रुप प्रोडक्शन कॉस्ट
into activities. पूरी प्रोडक्शन कॉस्ट को किसमें बाइफरकेट कर दो. इफ यू हैव द प्रोडक्शन कॉस्ट जस्ट बाइफरकेट इनटू डिफरेंट एक्टिविटीज. तो वो क्या आ जाएगी आपकी सारी एक्टिविटी कॉस्ट. एक्टिविटी 1 का कॉस्ट, एक्टिविटी 2 का कॉस्ट, एक्टिविटी 3 का कॉस्ट. ऐसे आपके टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट को आप किसमें बाइफरकेट कर दो इन डिफरेंट एक्टिविटीज. स्टेप 2 क्या होगा. जब आपकी एक्टिविटीज आ गई तो आइडेंटिफाई कॉस्ट ड्राइवर्स. नेक्स्ट स्टेप क्या होगा. कॉस्ट ड्राइवर्स को आइडेंटिफाई करना कि एक्टिविटी 1 का कॉस्ट ड्राइवर क्या है, एक्टिविटी 2 का कॉस्ट ड्राइवर. थर्ड स्टेप, calculate rate of each activity using cost drivers. हम ओवरऑल एब्जॉर्प्शन रेट ना निकाल के हम क्या निकालते हैं, सब एक्टिविटीज का अपना अपना रेट. ठीक. देन व्हाट वी डू, स्टेप 4, absorb the activity cost into the product. सब प्रोडक्ट में एब्जॉर्ब करना मतलब एलोकेट करना. और आफ्टर दैट कैलकुलेट द टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच प्रोडक्ट. मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको स्टेप 1 दिया होगा. मोस्ट ऑफ द टाइम आपको स्टेप 1 दिया होगा. वो अलग अलग एक्टिविटीज में ऑलरेडी बाइफरकेटेड होगा. आपको क्या करना है, जस्ट हैव टू आइडेंटिफाई द कॉस्ट ड्राइवर्स, यू जस्ट हैव टू कैलकुलेट रेट फॉर एवरी एक्टिविटी एंड देन जस्ट मल्टीप्लाई इट विद द प्रोडक्ट. जो अभी हमने फर्स्ट एग्जांपल किया था 80,000 वाला, जिसमें हमें प्रोडक्शन कॉस्ट 80,000 दी हुई थी और हमने OAR निकाला था ऑन द बेसिस ऑफ मशीन आवर्स. सेम इलस्ट्रेशन बट विद ABC कॉस्ट. सेम इलस्ट्रेशन है. स्काई, मून एंड बार, सन बार. यही क्वेश्चन था. हमने इसको किसके बेसिस पर किया था, ऑन द बेसिस ऑफ मशीन आवर्स. बट हियर इज अ ट्विस्ट. आपको वो जो 80,000 टोटल दिया हुआ था उसका बाइफरकेशन ये है. 80,000 is bifurcated into machine cost, component cost, setup cost and your packing cost. तो आपका वो 80,000 is divided into 4 cost. तो आपका step 1 already हुआ है कि प्रोडक्शन कॉस्ट को डिफरेंट एक्टिविटीज में बाइफरकेट कर दो. इट इज ऑलरेडी डिवाइडेड इनटू एक्टिविटीज. दिस इज बेसिकली व्हाट, दिस इज योर फर्स्ट स्टेप. ठीक है. नेक्स्ट स्टेप क्या है, वी हैव टू आइडेंटिफाई द कॉस्ट ड्राइवर. हमें क्या चाहिए, कॉस्ट ड्राइवर चाहिए. हाउ विल यू एलोकेट द मशीनिंग कॉस्ट, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट. मशीनिंग कॉस्ट को आप किसके बेसिस पे एलोकेट करोगे, व्हाट आर, देयर आर सो मेनी आवर्स, मशीन आवर्स, राइट. मशीनिंग कॉस्ट का कॉस्ट ड्राइवर क्या होगा, machine hours. Component cost, yes, your cost driver will be number of components. Setup cost, number of production setups.
Packing cost, number of customer orders. Very good. ये सब आपकी क्या हो गए? Drivers, customer orders. Third step, ये step 2 हो गया. Identify the cost driver. Now you have to compute the rate of it. अब रेट कैसे कैलकुलेट होता है? ऑब्वियसली टोटल करके. आपका मशीनिंग कॉस्ट का रेट क्या आ रहा है? 5000 divided by the total of this. Total of this is 0.07. 50,000 divided by 0.07. और जो हमने पहले आवर्स निकाले थे, कितने आ रहे थे वो आवर्स? 16,000 आवर्स. पहले वाले इलस्ट्रेशन में हमने निकाले थे ना 16,000 आवर्स. वो 5 lakh multiplied by 0.01. टोटल प्रोडक्शन कितना है आपका? 5 lakhs. यहीं पर ही दिया हुआ है क्वेश्चन में ही, देखो स्क्रीन पर ही है. टोटल प्रोडक्शन है 5 lakhs और मशीन आवर्स पर यूनिट कितना है? 0.1. तो टोटल कितने लगेंगे? 5,000, 6,000 एंड 5,000 है ना. तो टोटल कितने आ गए? 16,000. तो मेरा रेट क्या आ गया? My rate will be 5,000 divided by 16. पर उसका रेट कितना आ गया? 0.312. This is machine hour per unit. And how many units you are producing? 5 lakhs. So how many hours will it take to produce? 5,000 hours. Here 6,000 hours. And here 5,000 hours. So how much total hours you require to total hours? 16,000 hours and the total cost is 5,000. So what will be your rate? 0.31. Now let's come to number of components. How many components are there? 30. Number of components are 30. Your rate will be 15,000 divided by 30. 500 per component. यही रेट आएगा 500 per component. How many number of setups are there? 30. 26 plus 1 plus 3, 30. What is your setup cost rate? 1,000 rupee per setup. Number of customer orders. How many customer orders are there? 50. What is your cost? 600 per customer order या per order. ये आपका आ गया रेट. Now you have to allocate. ये क्या आ गया आपका? रेट आ गया. अब आपको क्या करना है? इस रेट के हिसाब से इस कॉस्ट को एलोकेट करना है अमंग दीज 3. ठीक. सबसे पहले हम मशीनिंग कॉस्ट को एलोकेट करेंगे. राइट. कैसे होगी मशीनिंग कॉस्ट एलोकेट? into 5,000 hours into 5,000 hours 1,550. तो आपकी मशीनिंग कॉस्ट कैसे चली जाएगी यहाँ पर? 1,550. सेकंड केस में 1860 और थर्ड केस में सेम केस है. अच्छा 1,550 राइट. ये हो गई. अब इसका टोटल देखो. दिस टोटल विल बी इक्वल टू
equal to your total machining cost. Four nine six 4960 वो थोड़ा अप्रोक्सीमेशन में हमारा प्रॉब्लम हो जाएगा. हाँ, अगर उससे करोगे तो वो एक प्रॉक्स आएगा. अब करो कंपोनेंट कॉस्ट को. यू हैव टू डिवाइड 15,000 ऑन द बेसिस ऑफ 500 पर कंपोनेंट. तो स्काई बार की क्या कॉस्ट आ जाएगी? 400 इंटू 500, 6 इंटू 500 and 20 into 500. राइट. नेक्स्ट सेटअप कॉस्ट कैसे चली जाएगी? 1000 पर सेटअप, 3000, 1000 and 26,000. और यही कस्टमर ऑर्डर्स का कैसे हो जाएगा? into 6 and into 6. क्लियर? क्या कर रहे हैं हम लोग? क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग कर रहे हैं. क्लियर है? इसी पे हमारा टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट निकल आएगा एंड देन वी कैन कैलकुलेट द प्रॉफिट ऑफ इट. और ये प्रॉफिट आपके ट्रेडिशनल से बहुत डिफरेंट आएगा, है ना? ये प्रॉफिट आपके ट्रेडिशनल से डिफरेंट आएगा. उसके अंदर हमारा शायद एक में लॉस आ रहा था, बाकी दो में प्रॉफिट आ रहा था, है ना? इसमें ऐसा नहीं होगा. इसमें आएगा डिफरेंस तो वो एप्रोप्रिएट आएगा क्योंकि आपने ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी किया है. ठीक. Let's do test your understanding 1. You have to click the picture of it. Really? Take the complete picture of this also. अच्छा, ये भी है. अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ. हाँ, उसी का ही पार्ट है. Drivers are already given, na? Can you start doing it? Help. Sorry? Okay. This one? Start कर दिया.
Have you allocated that set of cost? Okay, you're doing the traditional one. So you're doing the traditional one. Okay. On what basis you have calculated the OAR? किस basis पे calculate किया आपने? Then budget cost तो हमारा total ही होगा, उसमें split किया हुआ है सारे। तो total की हमारा budget cost। हाँ जी। आपने इसको किस रेट पर किया डाटा? आई वांट टू नो। रेट पर? कौन सा रेट निकाला? ओके। आप क्या कर रहे हो सर? बाउंसर है। चलिए क्वेश्चन क्लियर हुआ आपको? You keep doing it. Sir, travel makes and sells two products plus and double plus. The direct cost of the production are 12 for 1 unit of plus and 24 unit of double plus. Direct cost का मैं कुछ नहीं करना, उसे सिर्फ cost में लिखना है because it's already direct. Problem किस में आ रहा है? Problem आ रहा है अगर आप traditional costing के हिसाब से देखोगे तो problem आ रहा है how to allocate this 4,32,000. We need to have an overall absorption rate, right? हमें क्या चाहिए? ओवरऑल एब्जॉर्प्शन रेट। उसके लिए वी वांट समथिंग, या तो लेबर आवर्स या मशीन आवर्स। आई टोल्ड यू वी हैव ओनली लेबर आवर्स है। लेबर आवर्स की बेसिस पे निकलेगा हाउ मच, कितना आवर है टोटल आवर्स। यू आर टेकिंग 1 hour for 24,000 units and you are taking 1.5 hours for 24,000 units. So how much is the total hours? टोटल आवर्स कितने होंगे? टोटल आवर्स 2.5. टोटल आवर्स बेटा, यू आर टेकिंग 1 hour each for 24,000 units. 1 hour for 1 unit. तो टोटल कितना हो गया फॉर प्लस? 24,000 hours. एंड इन फॉर डबल प्लस कितना हो गया आपका? 36,000. टोटल आवर्स कितने हो गए? 60,000. 11.25 नो बेटा नो, Oh, yeah. 60,000. 24 plus 36, 60,000. My total cost is how much? 4,32,000. Total cost is 4,32,000 divided by divided by 60,000. तो कितना हो गया? 7.2 per hour. 7.2. Yes, this is my OAR as per traditional costing. Now get it? ठीक। अब हमें टोटल कॉस्ट निकालनी है, तो आपको दोनों की डायरेक्ट कॉस्ट दी हुई है। कितनी कितनी? इसकी 12 और इसकी 24। इनडायरेक्ट कॉस्ट मेरी कैसे एलोकेट होगी? 7.2 into 1 and 7.2 into 1.5. मुझे टोटल कॉस्ट बताओ एज पर ट्रेडिशनल कॉस्टिंग। मेरी टोटल कॉस्ट कितनी आएगी एज पर ट्रेडिशनल कॉस्टिंग? डायरेक्ट इज 12, इनडायरेक्ट इज 7.2, इट्स 19.2 फॉर प्लस, और डबल प्लस के लिए कितना हो जाएगा? 24 प्लस 7.2 into 5, 1.5. Actual आप क्या निकाल रहे हो? total. वो किसके लिए था? अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन के लिए था ना? क्या कितना बेटा? 34.8. You just have to calculate the cost. That's it. This is 10 point something, 10.8, right? 10.8. Okay. This is the cost as per traditional costing. कहाँ पे अटक रहे थे आप? इसको
ट्रैक नहीं करना है बेसिकली, राइट, कि कैसे आगे बढ़ेंगे. कैन यू डू द एबीसी कॉस्टिंग? राइट, आपका हो गया बेटा? प्रोडक्शन कॉस्ट में नंबर ऑर्डर की सारे भी ट्रेडिशनल में नहीं होगा. ट्रेडिशनल में आगे प्रोडक्शन कॉस्ट कैसे निकलेगी? ऐसे टेक द डायरेक्ट कॉस्ट, टेक द डायरेक्ट कॉस्ट, टेक द प्रोडक्शन कॉस्ट. हो गया. You already given the beta. The direct cost of production are 12 and 24. मैं फर्स्ट का 26.4 दिखाओ क्या कर रहे हो, मैं देखने की कोशिश तो कर रही हूँ आप क्या कर रहे हो. डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 7.3 Into 12 क्यों? Direct cost is different and your production cost is different. Direct cost कितनी है? मेरे को already 12 rupees दी हुई है और मेरी other जो production cost है it will be 7.2 per hour. Per hour will be दोनों 1. का नहीं 12 plus this is your direct cost. इसको हमें कुछ नहीं करना. 7.2 multiplied by 1 per unit. 7.2 and 7.2 multiplied by 1.5 per unit. 10.8. तो आपका प्लस का कॉस्ट आ गया 19.2 एंड डबल प्लस का कॉस्ट आ गया 13.34.8. मैं पहले वाला अलग कॉस्ट है फिर इसके अंदर दोनों टोटल कॉस्ट हो जाएगा. अच्छी कहाँ पे पहुंचे आप एक्टिविटी पे? वेयर? It's all like yeah, that's Let her finish the argument ABC पर. Done. अब ABC पे आ जाओ. Now you are given number of orders, number of batches, number of setups and special parts per unit. You have given दोनों के लिए. अब आपको दी हुई है कॉस्ट, दी हुई है आपको कॉस्ट ड्राइवर भी दिया हुआ है. तो बेसिकली आपका स्टेप 1 एंड स्टेप 2 ऑलरेडी हुआ हुआ है.
आपका टोटल कॉस्ट को बाइफरकेट किया हुआ है एक्टिविटी वाइज एंड यू हैव गिवन द कॉस्ट ड्राइवर. नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज कैलकुलेट द पर कॉस्ट ड्राइवर रेट. कितने सेटअप्स है हमारे पास टोटल? वी हैव वन नंबर ऑफ सेटअप्स पर बैच. सेटअप पर बैच है 1 एंड नंबर ऑफ बैचेस कितने हैं? 12. क्वेश्चन में देख है ना. तो टोटल कितने सेटअप्स हो गए आपके? 12. आपको इसमें थोड़ा सा वो दिया हुआ है राइट. नंबर ऑफ सेटअप पर बैच दिया हुआ है 1 एंड नंबर ऑफ बैचेस दिया हुआ है 12. तो टोटल सेटअप्स कितने हो गए? प्लस के 12. सेम विद द अदर वन. ये हो गए नंबर ऑफ सेटअप्स आपके कितने? 12 प्लस number of setups per batch is 3 and number of batches are 240. तो टोटल कितने हो गए? 7. स्क्रीन पे देखना है आपको क्या दिया हुआ है? नंबर ऑफ सेटअप्स पर बैच 1 और नंबर ऑफ बैच कितने दिए हुए हैं? 12. तो टोटल सेटअप्स कितने होंगे? एक बैच है ठीक है. और डबल प्लस के लिए आपको नंबर ऑफ सेटअप्स दिए हुए हैं पर बैच 3 और टोटल बैचेस है 240. तो कितने सेटअप्स करने पड़ते होंगे? 720. ये हो गया मेरा 720. तो मेरा रेट कितना आ गया? नंबर ऑफ सेटअप्स निकाले ना उसमें. तो मेरा रेट कितना आ गया पर सेटअप? रेट पर सेटअप कितना आ गया मेरा? कितना बोल रहे थे बेटा? 1000. नाउ स्पेशल पार्ट्स हैंडलिंग. स्पेशल पार्ट्स हैंडलिंग कितनी है मेरी? स्पेशल पार्ट्स पर यूनिट है 1 और मेरी टोटल यूनिट्स कितनी है? 24. क्या हो गया? We have 24,000 units ना. स्पेशल पार्ट्स पर यूनिट है 1 तो टोटल यूनिट्स कितनी है? तो हमें कितने स्पेशल पार्ट्स चाहिए होते होंगे? 24,000. तो मेरा कितना आ गया? 24,000 स्पेशल पार्ट्स फॉर 1 और डबल प्लस के लिए कितना चाहिए? मेरे स्पेशल पार्ट्स पर यूनिट है 4 और टोटल मेरी एनुअल प्रोडक्शन है 24. कितना चाहिए? 96,000. मेरा पर स्पेशल पार्ट रेट कितना आ गया? पर स्पेशल पार्ट रेट कितना आ गया मेरा? 0.5 आई गेस. 60 डिवाइडेड बाय 120 है ना. 0.5 पर स्पेशल पार्ट. 0.5 पर स्पेशल पार्ट. ऐसे ही नंबर ऑफ बैचेस. हाउ मेनी नंबर ऑफ बैचेस वी हैव? We have 12 batches and 240 batches. तो इसको तो सिंपल कर देंगे, इसमें तो कुछ है नहीं. 12 plus 240 कितना हो गया? 250t. 12 plus 240 252. 6. तो पर बैच कितना आ गया? डिवाइडेड बाय 252. 249.011. पॉइंट नहीं आएगा.
63 है और वो 252 नहीं मैं कह रही हूँ क्योंकि दोनों का टोटल 3 से डिवाइड हो रहा है राइट कितना आ रहा है ये 215 per batch. Number of orders. How many number of orders we have? 10 and 140. तो कितना हो गया 150? तो 19,800 divided by 150. 132 132 per order. अब बचे अदर ओवरहेड्स. आप इन अदर ओवरहेड्स को किन के बेसिस पर करोगे? इनका कोई कॉस्ट ड्राइवर नहीं है. On the basis of your labor hours, not 7.2. On the basis of your labor hours. तो labor hours मेरे स्टार्टिंग में कितने आ रहे थे? 24,000 and 36,000. 24,000 plus 36,000. 60,000 तो मेरा पर आवर रेट आ जाएगा. 26,000. 216 divided by 60,000. पर आवर रेट कितना आ गया मेरा? 3.6. Now allocate the cost. Plus and double plus. You have the per hour rate. You have your drivers. Just allocate this cost. Allocate the cost in plus and double plus. You have the rate, you have the cost driver, just allocate it. सेटअप्स वाला आपको क्या दिया हुआ है? 1,000 will be multiplied by 12. 1,000 आ रहा है. हाँ 70. Okay 100. तो जो आपने ड्राइवर निकाला उसी से 12 into 100 and 720 into 100. कितनी कितनी कॉस्ट आ रही है भाई? Start or allocated? Okay.
टोटल बता रहे हैं। टोटल बता दो मेरे को, प्लस का टोटल कॉस्ट कितना आ रहा है? हम्म, दोनों का टोटल भी तो 4,32,000 आना चाहिए ना, दोनों का टोटल तो 4,32,000 आ रहा है। लेट्स मैच कॉस्ट बाय कॉस्ट। मैं इसका आंसर ही शो करती हूँ। Just match it, बच्चा। This is how you will allocate. Setup cost 1,200 and 72,000. Verify. 12,000. Special parts 12,000 and 48,000. इसमें 0.5 था ना? मैंने वो यहाँ पर भी देखा, मैंने वहाँ भी 0.5 into 24 and 0.5 into 96. Other handling cost just verify once, मुझे पता लग जाएगा। Other handling cost 1,320 and 1,8,480. Other handling. Other handling cost भी तो है। Order handling and 18,400. Material handling. Material handling cost. Other overheads. 86,400. आपकी हमने अपने आप किया कि नहीं किया है? अच्छा यार यहाँ पे होंगी। बका क्या हो गया? यही आ रहा है। ठीक, नेक्स्ट व्हाट यू विल डू इज आपको इसका पर यूनिट निकालना है, डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ यूनिट्स। दिस 103,920 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। हाँ, पर यूनिट निकालना है। कितना आ रहा है पर यूनिट कॉस्ट? 24,000 से डिवाइड दोनों को। हाँ जी हाँ जी, और दूसरा वाला 20.6। अब आपका ये क्या हो गया? ओवरहेड कॉस्ट आ गया। लुक एट द स्क्रीन।
ये ओवरहेड कॉस्ट आ गई। आपकी डायरेक्ट कॉस्ट कितनी थी 12 and 24 दैट ऑल। हाँ डायरेक्ट कॉस्ट वाज ऑलरेडी गिवन 12 and 24। आपकी टोटल कॉस्ट कितनी आ गई 16.33 and 37.67। और यही कॉस्ट आपकी ट्रेडिशनल कॉस्टिंग में आ रही थी 19.2 and 34.80। तो देयर इज अ डिफरेंस, है ना। अब नाउ यू कैन क्लियरली से कि भैया दिस 16.33 इज मोर एप्रोप्रिएट एंड दिस 37.67 इज मोर एप्रोप्रिएट। ज्यादा का बात नहीं है, as per activity based costing it is more appropriate। ठीक है, जब आपको इसका एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा तो एक्सप्लेनेशन में आपको यही दोगे कि भैया ट्रेडिशनल कॉस्टिंग में मेरी कॉस्ट ये आ रही थी, इसमें मेरी ये आ रही थी, सेलिंग प्राइस मेरा क्या था, उसके बेसिस पे वी विल एलोकेट और वी विल एक्सप्लेन। सर आपका हो गया। Then you did it on your own or what? So you can do it or not? You can do it, na? That's what I'm on. पूरा या आंसर पूरा चाहिए? क्वेश्चन है, मैं से थोड़ा सा छोटा कर दूं ताकि ज्यादा आ जाएगा। दिस वाज योर ट्रेडिशनल, पहले ट्रेडिशनल का ले लो तो कंफ्यूजन हो जाएगा। Then this was your ABC का working। Then now this is the complete answer। Then थोड़ा सा ये रीजन एक बार पढ़ लेना, ये इसका भी कर लो, हेलो इसका भी कर लो। That let's end it here only। Just repeat the question once on your own एक बार। कुछ क्लियर नहीं है तो take the picture again। क्लियर है? ठीक है, just repeat what we have done in the class। I'll ask in the next class and we'll continue from here only। ठीक है, तब तक I'll try to arrange the books। I know थोड़ा सा difficulty आ रहा है। एक बार मैनेज, you can ask from the reception if they can provide you with the soft copy। okay, reception पे एक बार बात कर लो, ठीक है, बाकी हार्ड कॉपी का अरेंजमेंट हम कर रहे हैं। ठीक, let's end the class here only।